स्टुडंट ब्रेझिंग आणि सोल्डरिंग आपण बघतोय. तर ब्रेझिंग आणि सोल्डरिंग मधला बेसिक डिफरन्स आपण इथं बघू व्यवस्थित बघा वन बाय वन. ब्रेझिंग प्रोसेस अँड सोल्डरिंग प्रोसेस. So welding, brazing, soldering equipment is used to join two materials, often metal together. नॉर्मली मेटल्सला आपल्याला वेल्डिंग करण्याकरता जो ब्रेझिंग करण्याकरता सोल्डरिंग करण्याकरता आपण हे प्रोसेस वापरतो. The equipment itself may consist of a complete system or a station, power source, gun or torch. बरोबर. त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिक एक मोठी मशीन असू शकते किंवा एक पॉवर सोर्स असतो, काही स्टेशन असेल बरोबर, किंवा गन मशीन गन आहे बरोबर, वेल्डिंग गन, सोल्डरिंग गन किंवा ब्रेझिंग गन आहे, टॉर्च असेल किंवा और मॉनिटर कंट्रोलर. As per American Welding Society, that AWS is one of the agency that defines that welding as a material joining process which produces coalescence of material. Welding मध्ये काय होतं, which produces the coalescence of materials by heating them to suitable temperature. बरोबर. coalescence कसं तयार होतो, मेल्टिंग कसं तयार होतो, because by heating them a suitable temperature with or without application of pressure. So आपण बघितलं होतं, and basically welding can be classified in three types: welding with heat only, welding with heat and pressure as well as, and welding with pressure only. So with or without the use of pressure as well as without use of the filler metal also. बरोबर. आपण बघितलं होतं वेल्डिंग करताना filler metal is not always required. तर आपण बघितलं होतं MIG is having that consumable electrode, whereas TIG welding, tungsten inert gas welding, that electrode is not consumable. We have to consume the another filler rod. So that is your welding process. Whereas this American Welding Society also defines this brazing and soldering. बरोबर. Distinguishes brazing and soldering as welding sub operations. बरोबर. Brazing and soldering काय म्हटलं त्यांनी, they are distinguishes as sub operations, although they are usually considered completely different process from welding. जरी त्या वेल्डिंग पेक्षा खूप वेगळ्या प्रोसेस आहे, but they are considered as a sub वेल्डिंग प्रोसेस, सब ऑपरेशन्स. वेल्डिंग सब ऑपरेशन बरोबर, जरी त्या ब्रेझिंग प्रोसेस वेगळी आहे किंवा सोल्डरिंग प्रोसेस पूर्ण वेगळी आहे, बट दो ऑल्दो इट इज कन्सिडर ॲज अ सब ऑपरेशन्स, लाईक ब्रेझिंग ऑपरेशन और सब welding operations or soldering operation. बरोबर. The distinction between brazing and soldering can be classified by following ways. Welding typically joins two workpieces by melting the process together. बरोबर. त्या मेल्टिंग पीसेसला काय करतात ते, by melting them together. बरोबर. Plastic welding using solvents is an exception in this rule. It is various method as described as dedicated section below. No, that welding process मध्ये काय होतं नॉर्मल, थोडं लक्षात घ्या. We are melting the metal. जे मेल्टिंग पीस मला वेल्डिंग करायचे, so we are melting it, and at that joint there, after melting they are solidified and produce a coalescence. That is welding process. Whereas brazing मध्ये काय होतं, brazing is required less temperature, that is 450 degrees Celsius above. बरोबर. ब्रेझिंग युजेस अ फिलर अलॉय, ज्याप्रमाणे वेल्डिंग मध्ये पण आपण काही वेळेस वेल्डिंग रॉड वापरतो फिलर मेटल, समटाइम वी आर नॉट युजिंग. इन ऑल्सो ब्रेझिंग ऑल्सो इट युजेस अ फिलर अलॉय, फिलर रॉड लागतो तिथे, with includes the temperature above which is completely liquid, above 450 degrees Celsius. बरोबर. So brazing temperature is above 450 degrees Celsius. So that brazing is carried out at around 400 degrees Celsius above and below the solidus. बरोबर. The point which the substance is purely solid. The solidusच्या खालीच बरोबर, of the base material. More simply, brazing joins two pieces by melting a filler metal between them or without melting them. बरोबर. म्हणजे ज्या मेटलला आपल्याला जॉईन करायचं त्या मेटलला वेल्डिंग नाही होत. सॉरी, they are not melting that parent metal, but they are only melting that brazing filler rod. So like welding, it may use of several different heating methods. Bro, that is the brazing process. Normally temperature किती, that is above 450 degrees Celsius and below the solidus temperature. And we are adding the filler metal in between brazing process. Whereas soldering is normally less, must be less than 450 degrees Celsius. बरोबर. Brazing बघितलं आपण, brazing is above 450 degrees Celsius, whereas soldering is below 450 degrees Celsius. Soldering is similar to brazing. Normally काय आहे, soldering is similar to brazing but differs in that liquids of the filler metal solder must be less than. बरोबर. त्या ठिकाणी काय ब्रेझिंगचा रॉड काय above 450 degrees Celsius मेल्टिंग होतो, whereas soldering वायर जे असते, soldering that is melted below
450 degrees Celsius. Soldering may therefore be considered as a type of low temperature brazing. बरोबर, त्यामुळे सोल्डरिंगला काय म्हणतात आता, सोल्डरिंग कॅन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ लो टेम्परेचर ब्रेझिंग. कारण ब्रेझिंग मध्ये किती आहे, 450 डिग्री सेल्सियस अबव टेम्परेचर आहे, whereas soldering involves the less temperature than 450 degrees Celsius. So now the applications of different soldering, welding and brazing. That table we have seen last time actually, but we'll again concentrate on that. Welding advantage the high joint strength and temperature resistance as compared to brazing and soldering. Advantage is that high joint strength. The welding joint केला मी, that is having the high joint as well as high strength in your welding process. Whereas in your brazing and soldering, it is somewhat less. So that advantage of welding is high joint strength and temperature resistance पण high असतो तिथे, बरोबर. But whereas disadvantage is possible distortion because of that high temperature. There may be some possible distortion of thin base section. जेव्हा मला ज्या मेटल प्लेटला वेल्डिंग करायचं वेट दे आर हॅव्हिंग थिन बेस, बरोबर, त्याचं सेक्शन त्याचा अँगल काय कमी आहे, थिन आहे. So due to high heat, difficult to automate, expensive. बरोबर, these are the number of disadvantages. So there may be some possible distortion of thin base sections due to high heat, difficult to automate such welding processes, and expensive also as compared to other process. Applications of welding are strong permanent joining of large bases. बरोबर, तुम्हाला सांगितलं मी कंपनीमध्ये हेवी क्रेन्स वगैरे बिल्डअप होतात, दे आर युजिंग दिस strong permanent joint welding for large base sections. बरोबर, मोठे मोठे स्ट्रक्चर जास्त कंपनीमध्ये, मोठे मोठे प्रेशर वेसल, मोठे मोठे कंटेनर, काही इव्हन मोठे मोठे लिफ्टिंग टूल्स टॅकल्स काही, they are only welded by this strong permanent joining process called as a welding. Now we'll understand the brazing process. बरोबर, आपण आता ब्रेझिंग काय लक्षात घेऊन, ब्रेझिंग प्रोसेस क्लीन्स जॉईंट. बरोबर, ब्रेझिंग प्रोसेस काय आहे, क्लीन्स जॉईंट. ब्रेझिंग मध्ये काय जॉईंट क्लीन असतं एकदम, टाईट टॉलरन्सेस. ब्रेझिंग इन्व्हॉल्व व्हेरी टाईट टॉलरन्सेस आर देअर अँड इझी टू ऑटोमेट. आपण बघितलं फ्युजन कंपनीची, अमेरिकन फ्युजन कंपनी, दे आर प्रोड्युसिंग डिफरंट brazing machines, automatic brazing machines. So easy to automate and ease of dissimilar metal joining. Various different metals also can be easily brazed together with the help of this brazing process, and semi-reversible. If you have to reverse the process also, it can be reversed easily. That is brazing process. Now there are some disadvantages of this brazing. Relatively poor joint to strength as compared to welding. वेल्डिंग मध्ये काय आहे, joint strength is more as compared to brazing and soldering. But in brazing, the relatively poor joint strength and joints may be damaged at high temperatures. Joints may be damaged at high temperatures, and metal must be pre-cleaned before brazing. Pre-cleaning is very much essential. Pre-cleaning is very much essential in brazing operation. So that is brazing, and that brazing is used for thin linear joints automated fabrication. So that in automated fabrication काही ठिकाणी, so at there we have to use this brazing operation. Now we go for the next process called as the soldering. तिसरी प्रोसेस जी आपण शिकतोय त्या चॅप्टर मध्ये, that is soldering. Soldering is a reversible process. We can do the soldering or desoldering also. कारण काही काही कॉम्पाउंड मध्ये काय सोल्डरिंग केलेले वायर्स वगैरे जास्त स्ट्रक्चर असतं. विथ द हेल्प ऑफ दॅट डिसोल्डरिंग, म्हणजे परत त्याच रॉडनी ज्यांनी सोल्डरिंग केलं त्यांनीच आपल्याला हिटिंग करून अगेन वी हॅव टू रिव्हर्सिबली डिसोल्डर ऑल्सो. सोल्डरिंग प्रोसेस काय रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. वी कॅन सोल्डरिंग इट और वी कॅन डिसोल्डर इट. अपोजिट टू सोल्डरिंग, सोल्डरिंग जॉईन केलं असतं आणि डिसोल्डरिंग काय करतो आपण, वी आर dismantle the parts in different electrical components. बरोबर, इलेक्ट्रॉनिकचे कॉम्पाउंड जास्त इलेक्ट्रॉनिकचे, that in that we have to use this desoldering process. That's why it is called as a reversible process. Most joints are temperature sensitive. Solders are commonly lead based. बरोबर, सोल्डरिंग वायर जास्त लीड आणि टीनचा alloy असते. बरोबर, सोल्डर वायर जास्त सिल्वर कलरचे. बरोबर, that is basically lead and tin alloy, and that soldering is used mostly for plumbing, electronics and integrate मेटल वर्क. बरोबर, वेगवेगळ्या प्लंबिंगच्या ठिकाणी वापरला जातो सोल्डरिंग. इव्हन इन सम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ऑल्सो युजिंग दिस
सोल्डरिंग इन लार्ज प्रोपोर्शन. इव्हन इंट्रिकेट मेटल पार्ट, काही कॉम्प्लेक्स मेटल पार्ट आहे काही, त्या ठिकाणी सुद्धा सोल्डरिंग केलं जातं. बरं, मटेरियल वेल्डेबिलिटी म्हणजे काय? द ॲबिलिटी ऑफ गेटिंग वेल्डेड, दॅट इज मटेरियल वेल्डेबिलिटी. These are the different joints. बरोबर, welding joints. These are the different welding joints are there. Butt weld, lap weld, butt joint in vertical position. बरोबर. So these are the different types of welding joints. Welding joints चे type वेगवेगळे. And this is called as a welding gun. Arc welding, gas welding, resistance welding. We are already studied in that. Resistance welding, shielded metal arc welding. And now brazing. Brazing काय? Equipment used in brazing are typically the process heating method. बरोबर, ब्रेझिंग मध्ये बघा बघितलं आपण, त्या प्रोसेसने आधी हिटिंग काय करतो आपण? हिटिंग करतो, ते मेटल वेल्डिंग करायचं मला ब्रेझिंग करायचं. देन ऑल ब्रेझिंग युजेस अ फिलर मेटल. नॉर्मली काय, ब्रेझिंग इज नॉट कॅनॉट बी डन विदाउट ब्रेझिंग फिलर रॉड. ब्रेझिंग मध्ये फिलर रॉड लागतोच. बरोबर, ब्रेझिंग रिक्वायर्स द फिलर मेटल, frequently copper, brass, silver or aluminum silicon to join two bases together. Frequently काय काय वापरतो आपण? We can use the copper metal as a filler metal, brass metal as a filler metal, or silver or aluminum silicon as a filler metal in brazing operation. So there are number of types of brazing operation: torch brazing, furnace brazing, silver brazing, or braze welding. Oh, that is induction brazing also there. So these are the different types of brazing operation. ऑलरेडी आपण हा व्हिडिओ बघितला होता. त्याच्या पुढच्या पाठामध्ये आपल्याला सोल्डरिंग बघायचं. काय सोल्डरिंग? सोल्डरिंग इज अ इसेन्शियल लो टेम्परेचर ब्रेझिंग. बरोबर, नॉर्मली काय सोल्डरिंग, देर इज गुड सिमिलॅरिटी बिटवीन सोल्डरिंग अँड ब्रेझिंग. ब्रेझिंगला फक्त टेम्परेचर अबव 450 डिग्री सेल्सिअस आहे, अँड फॉर सोल्डरिंग इट इज लेस दॅन 450 डिग्री सेल्सिअस. सो सोल्डरिंग is essentially called as a low temperature brazing which is performed with soldering iron. बरं, सोल्डरिंग आयन आपण करतो ते हँड टूल विथ अ हिटेड मेटल टिप. सोल्डरिंग आयन काय असते? हँड टूल असतो एक विथ अ सोल्डरिंग मेटल टिप. पुढची जी टिप आहे त्याची मेल्टिंग होती, बरोबर, हीट होती ती हिटेड मेटल टिप. द आयन इज प्लेस नियर द फिलर अलॉय. बरोबर, मग ती हिटेड मेटल टिप काय? इट इज प्लेस नियर द फिलर अलॉय and the parts to be joined in order to melt and flow the solder into the joint in a process known as a wetting. बरोबर, वेट सोल्डरिंग जे करतो आपण त्या ठिकाणी काय करतो आपण? वी आर प्लेसिंग दॅट बोथ alloy and soldering metal at close to each other. The solder itself was a historically lead based. Normally soldering wire काय असते? It is a lead based and tin based solders. बरोबर, lead and tin based solders are there still in widespread use. Bro, nowadays also they are using this tin based or lead based soldering wires or soldering. However, recent lead free additives or directives such as ROSs are sparked in interest in the use of tin, copper, indium, bismuth, silver, and zinc to replace the lead in solders. Like brazing and welding, soldering typically involves the use of flux. बरोबर, ज्याप्रमाणे आपण सोल्डरिंग मध्ये किंवा वेल्डिंग मध्ये सुद्धा आपण बघितलं फ्रेझिंग मध्ये यू आर युजिंग द फ्लक्स. हिअर ऑल्सो यू हॅव टू यूज द फ्लक्स. फ्लक्स मुळे काय होतं? बाहेरचं जे ऑक्सिडेशन असतं, बाहेरचा ऑक्सिजन असतो, दॅट विल नॉट बी रिएक्टिंग विथ द ब्रेज पार्ट. So that flux will provide the covering layer as a protective layer on that solder parts for from not reacting with the oxygen, atmosphere oxygen. So that is your soldering. Solder joints are reversible, meaning that solder can be melted off a joint and the connection can be resoldered if necessary. आणि कधी कधी काय होतं, ड्यू टू सम चेंजेस इन द डिझाइन, समटाइम आय हॅव टू डिसोल्डर इट. So flux will remain but can be easily be cleaned off using abrasives and chemical. मग abrasive आणि केमिकल वापरून आपण काय क्लिनिंग पण करू शकतो डिसोल्डरिंग केलेलं पार्ट. बरोबर, आपण एक ब्रेझिंगचं सोल्डरिंगचा व्हिडिओ बघू जस्ट म्हणून. ब्रेझिंगचा आपण अजून एक व्हिडिओ बघू. Hey, hello all. My name is Prashant. I'm the founder of Digital Training, online live interaction
So this is the brazing operation. With the help of the torch, that metal is melted. With your parts aligned, next we'll show you how to properly heat for brazing the assembly. Brazing is a two-part process. So brazing का two part process है. ये दोन part मतलब heating करायचं ते join करायचं बरोबर. So we can see that. First, you'll need to bring both the pieces of brazing up to temperature quickly and evenly. So temperature is high केलं जातं. Then we have to apply the brazing filler rod. We're going to use an oxyacetylene torch as the heating torch tip that's appropriate for the part size has been attached. Adjust the torch for a reducing flame. Okay, the torch produces this proper torch. जब आपण बघितलं आपण types of flame. हे बघा inner cone दिसतोय, outer cone दिसतोय. Outer cone मला heating करायचं त्या ठिकाणी त्याला welding करायचं म्हणा soldering. Outer cone ही soldering केलं का मी heating मग heat temperature झाल्यानंतर काय करायचं तिथं तो brazing चा rod मला apply करायचा आहे. आता या ठिकाणी जरा जॉईन करायचं समजा ते हिटिंग करतात त्या ठिकाणी बरोबर प्रॉपर हिटिंग झालं का तेव्हा तिथं ब्रेजिंग रॉड अप्लाय करायचं होतं. Bring pieces up to temperature quickly and evenly. Careful not to let your brazing temperature heat base metal materials melt to point or you'll damage the part. The part has been fluxed to anti-flux, the flux will become clear or transparent at this temperature. If you didn't use flux, you can tell you've reached brazing temperature by the dull red color of the metal. Now that we're at brazing temperature, pull the flame back a little and apply the filler metal firmly against the tube at the junction of the fitting. If the joint has been properly heated, the filler metal will melt, penetrate, and completely fill the joint. As you can see, this looks like a good joint. Make one final pass of the flame at the base of the joint. Give the joint a little twist if possible to make sure any gas or flux that's been trapped is released. Agitating the joint while the alloy is still molten to reduce flux inclusion. Now that we've brazed the assembly, it's time to clean it. In the last video, we'll show you how to remove residual flux. Be careful not to do this while the alloy is solidifying or else cracks could develop. If you have any questions or need assistance with your brazing, ही कंपनी मोठी काहीतरी ब्रेजिंगची बरं ग्लोबल ब्रेजिंग सोल्युशन देणारी कंपनी आहे मल्टीनॅशनल कंपनी लुकास मिलफूड बरोबर त्याचा व्हिडिओ होतो आपण आता पुढचं ऑपरेशन बघू. From the very start, we have been on Shopify, built the website all by ourselves. Hi, that's Gayatri and that's Akita. And ब्रेजिंग आणि सोल्डिंग आपण हिंदीमध्ये बघू. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस सेशन में बहुत वो सोल्डरिंग आयरन की मदद से नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस सेशन में बहुत स्वागत है. मैं आर्यन विश्वकर्मा और आज के हमारे सेशन में हम जानेंगे कि ब्रेजिंग और सोल्डरिंग ऑपरेशन क्या होते हैं. दोस्तों पहले समझते हैं कि ब्रेजिंग क्या होता है. ब्रेजिंग जो है इट इज ए लो टेम्परेचर जॉइनिंग प्रोसेस. जैसा कि हमारे वेल्डिंग ऑपरेशन में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर का हम इस्तेमाल करते हैं मेटेरियल को ज्वाइन करने के लिए. उसमें मटेरियल को मोल्डर स्टेट तक लेके जाते हैं और उसके बाद में आइदर हम प्रेशर या नॉन प्रेशर के हिसाब से हम वेल्डिंग करते हैं. लेकिन ब्रेजिंग में क्या होता है, टेम्परेचर काफी लो रहता है और जो टेम्परेचर इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वो 840 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इस्तेमाल करते हैं. और ब्रेजिंग जो है एक लो टेम्परेचर प्रोसेस है जिसमें कि हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो बेस मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके नीचे के टेम्परेचर में परफॉर्म करते हैं. यानी कि बेस मटेरियल जो इसमें होता है वो मेल्ट नहीं करता है. इट इज अचीव बाय डिफ्यूजन विदाउट फ्यूजन. जैसे कि हम वेल्डिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, दोनों मेटल को हम मेल्ट करके उसको फ्यूज करते हैं. यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है. यानी कि बेस मेटल जो है वो मेल्ट नहीं कर रही है. और ब्रेजिंग को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. टॉर्च ब्रेजिंग, डिप ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग और इंडक्शन ब्रेजिंग. दोस्तों ब्रेजिंग का जो टिपिकल ऑपरेशन होता है उसमें वर्क पीसेस होते हैं जिनको कि हमको जोड़ना होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वर्क पीस, एक राउंड सर्कुलर सिलेंड्रिकल पार्ट है, दूसरा एक प्लेट है
हमको दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। एक फिलर मेटल का या फिलर रॉड का इस्तेमाल किया जाता है और एक टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो फिलर मेटल जो होता है टॉर्च से उसको मेल्ट किया जाता है और उसको दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि ब्रिजिंग ऑपरेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। डिसिमिलर मेटल्स व्हिच कैन नॉट बी वेल्डेड कैन बी जॉइंड बाय ब्रिजिंग। अगर हमारे अलग अलग मेटल्स हैं उनको हम टिपिकली वेल्डिंग ऑपरेशन में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन वो ब्रेजिंग में जुड़ा जा सकता है। वेरी थिन मेटल्स कैन बी जॉइंड, हम थिनर सेक्शंस को भी इसमें जोड़ सकते हैं। मेटल्स विद डिफरेंट थिकनेस कैन बी जॉइंड इजीली। अलग अलग थिकनेसेस के मेटल अगर हैं, अगर आपने 2 mm का और 4 mm का मटेरियल लिया है, उसको भी आसानी से आप ब्रेज कर सकते हैं। इन ब्रेजिंग थर्मल स्ट्रेसेस आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द वर्कपीस, हेंस देयर इज नो डिस्टोर्शन। जैसे कि हमारे वेल्डिंग ऑपरेशन में काफी डिस्टोर्शन होता है, ठीक है ना। डिस्टोर्शन की वजह से पार्ट भी काफी बार बकल हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ब्रेजिंग ऑपरेशन में डिस्टोर्शन नहीं होता है और थर्मल स्ट्रेसेस भी क्रिएट नहीं होते हैं। और ब्रेजिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए कार्बाइड टिप्स को स्टील टूल होल्डर में हम लोग ब्रेज करते हैं मशीनिंग ऑपरेशन के लिए। दोस्तों इससे कुछ डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। ब्रेज जॉइंट्स हैव लेसर स्ट्रेंथ कंपेयर्ड टू वेल्डिंग। इसका जो स्ट्रेंथ होता है कंपेयर्ड टू वेल्डिंग काफी कम होता है। जॉइंट प्रिपरेशन कॉस्ट इज मोर। वेल्डिंग में जॉइंट प्रिपरेशन में इतना खर्चा नहीं आता, इतनी मेहनत भी नहीं लगती है, लेकिन ब्रेजिंग के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। और ये थीन सेट मेटल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है उसको जोड़ने के लिए, जिसमें कि स्ट्रेंथ काफी कम रहता है। दोस्तों आइए जानते हैं सोल्डरिंग ऑपरेशन के बारे में। दोस्तों सोल्डरिंग ऑपरेशन जो है एक लो टेम्परेचर जॉइनिंग प्रोसेस है, जैसे कि हमने ब्रेजिंग में देखा था। ये भी काफी लो टेम्परेचर में पार्ट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर का हम इस्तेमाल करते हैं वो टिपिकली 840 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे रहता है। और जो सोल्डरिंग का है इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोटिव कंपोनेंट के जो रेडिएटर्स होते हैं उसको सीलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टीन के कैन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में काफी हाई वॉल्यूम में इस्तेमाल किया जाता है सोल्डरिंग ऑपरेशन का। और जो मटेरियल थर्मली सेंसिटिव होते हैं उनको भी जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और डिसिमिलर मेटल को भी जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोल्डरिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल काफी वाइडली और बहुत पॉपुलर तरीके से सर्किट बोर्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो लगते हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टिपिकली आपने देखा होगा कि एक सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है और सोल्डरिंग वायर रहते हैं, जिनको कि सोल्डरिंग वायर को सोल्डरिंग आयरन की मदद से मेल्ट करके पार्ट को सर्किट बोर्ड पे जोड़ने का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये सर्किट बोर्ड है और सर्किट बोर्ड में ये कॉपर पैड है और ये सोल्डरिंग वायर है। सोल्डरिंग वायर जो है ये कंपोनेंट का लीड है ना, कंपोनेंट को यहाँ पर से जोड़ना है सर्किट बोर्ड में, तो इस लीड को यानी कि सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर सोल्डरिंग वायर को मेल्ट करके यहाँ पर जोड़ा जाता है ताकि ये पार्ट जो है सर्किट बोर्ड में ठीक से होल्ड करे। दोस्तों थोड़ा सा सेशन था आपके लिए कि आपको ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दी जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा वेल्डिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर चेक करें। उसमें हमने वेल्डिंग के टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सारे को मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों आप हमारे क्वालिटी हब इंडिया के दूसरे वीडियो को भी जरूर चेक करें और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद। माशाल्लाह स्टुडंट्स, ब्रेजिंग आणि सोल्डरिंग काय सिंपल ऑपरेशन आहे. ब्रेजिंग मध्ये कंपॅरेटिव्हली थोडी हीट जास्त असते, अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस, आणि सोल्डरिंग दॅट इज लेस हीटिंग as compared to brazing. So soldering can be called as a low temperature brazing. बरं, लो टेम्परेचर ब्रेजिंग आपण शेवटचा व्हिडिओ बघू. हा स्टेप दाखवतो ब्रेजिंग साठी.
आपण अजून एक ब्रेजिंग ऑपरेशन बघू इथं व्हिडिओमध्ये. Now I'm going to show you how to make a 3/4 inch braze joint. Preparation still pretty much the same as soldering, except not have to use the flux with the brazing, and instead of using the solder, ब्रेजिंग जॉइंट आहे, कॉपर जॉइंट आहे. you'll use a brazing rod. On this Brazing rod rod, brazing you'll have rod. a manufacturer name and then a number after that. What that number signifies is the silver content of that brazing rod. A couple other differences is we're going to switch out to a larger tip. This brazing requires more टिप heat, साईज असते पुढे. ब्रेजिंगची टिप साईज. and for the same reason, I'm going to change my gloves, go to a pair of leather work सेफ्टी हँड ग्लोव्स gloves घालतो as I'm doing the brazing because of the ड्युरिंग ऑपरेशन. Now the technique is still going to be the same as with the soldering. You're going to first preheat pipe first, then you're fitting. In this case, it's a coupler. You want to keep your heat moving and never direct your heat directly on the face of this fitting. You want to angle your heat so that the hottest part of your torch is facing back towards the center of that coupling so that it uses capillary action and draws this brazing ते मेटल काय होतं, कॅपिलरी ऍक्शन मध्ये मेल्ट होऊन त्या जॉइंट मध्ये फील होतं ते. ड्युरिंग ब्रेजिंग that metal enters in that joints by capillary action. Start on the bottom, work After your way melting. up one side, go to the other side, start on the bottom, work your way up the other side as you're creating that dam inside that fitting, then tie it in across the top. Watch me. I'm preheating this pipe first. Get it warm inside that fitting before I move my heat to the fitting outside the race. Make sure that fitting gets good and hot. Then you start putting your brace rod in. If it gets hot, keep that brace rod in there. The rod needs to ज्या ठिकाणी मला follow ब्रेजिंग करायचं त्या ठिकाणी हिटिंग करायचं मी. going around the हिटिंग coupling. केल्यानंतर काय करायचं मला तिथे ऍड करायचं आपलं. Now, त्या ठिकाणी ब्रेजिंग फिलर मेटल मला अप्लाय करायचं. you're coming around, you want to make sure that your rod and the heat are following each other. Take that first side, go to the other side, start back on the bottom. हिटिंग केल्यानंतर प्रॉपर टेम्परेचर अटेंड झालं तिथे मला ब्रेजिंग रॉड फिल करायचं. ब्रेजिंग रॉडचं काय ऍड करायचं मला का. All right, this concludes So our this is solar brazing braze operation. video. Come down here to do your test. If you haven't received your glasses or your gloves with other PPE, we will provide it for you. Make sure you have your work boots, pants, something to pull your hair. If you have long hair, you will not enter this shop and you will not get signed off on your test. Also, please make sure to bring your test sheet so that you can get it signed off. Thank you. अशा प्रकारे ब्रेजिंग आपण बघितलं. आता आपण सोल्डरिंग पण बघू एक मिनिट.
सोल्डरिंग ऑपरेशन नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असतात, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तिथे वापरला जातो. Hey everyone, welcome to this beginner only soldering tutorial. I'm making this video to demonstrate good soldering techniques and to break down the process into 5 different steps. Stick with me, practice a bit, and you'll get good at it too. When you need a soldering iron, something that puts between your tip like a wet sponge or a grass sponge. फ्लक्स आहे Solder, तिथे, and while optional, there are trouble. फ्लक्स वापरत होती आपण. ही सोल्डरिंग वायर आहे, सोल्डरिंग One more आयर्न. note, solder is very hot. Its melting temperature is only twice the temperature of water. Hot metal looks ते the पेपर same, इझिली so जळू it's शकतो not त्याने, very सोल्डरिंग आयर्न. careful. ही सोल्डरिंग आयर्न आहे, मग सोल्डरिंग गन म्हणतो आपण त्याला. Let's jump right into it. The proof of पहिल्यांदा आयर्नला हिटिंग करायचं, बरोबर. If you're soldering larger connections with more चांगल्या प्रकारचं स्टँडर्ड क्वालिटीचं सोल्डरिंग मशीन आहे ते. with a temperature adjustable. बरोबर 600 ते 700 डिग्री फॅरेनहाइट Adjust accordingly. और अराउंड 300 डिग्री सेल्सिअस. Next, your components. नाही तर ह्या वायरला जॉईन करायचं मला बघा. This is where you can use help. If you're या soldering दोन वायर जॉईन करायचं मला. the circuit board, then they'll lead the component into a V shape so that it stays in place flush against the board. किंवा मला स्पेसिफिक डिझाईन करायचं मला. I can join this LED on this There are any number of board ways also. to keep your components steady, so feel free to get creative. Next, clean the tip of your iron. Use a brass sponge बरं, or brass sponge to remove any oxidation. आयर्नला क्लीन करून घ्यायचं आधी, सोल्डरिंग आयर्नला. A dirty त्यानंतर surface covered सरफेस with ऑफ मेटल oxide क्विकली मेल्ट द can happen and result in ऑक्सिजन. त्याच्यामुळे काय त्याच्यात फ्लक्स वापरायचं. Always ह्या सोल्डरिंग रॉड आहे बघा, सोल्डरिंग रॉड काय होतं, provide the connection हे फ्लक्स मध्ये घ्यायचं त्याला बुडून. has rosin in its core. Rosin acts like flux butter, which keeps फ्लक्स आहे ते, फ्लक्स मध्ये बुडवत आहे ते. among the surface. फ्लक्समुळे काय होतं, ऑक्सिडेशन होत नाही त्या It's मेटलचं. not going to be sealing solder. तेव्हा ते मेल्ट झालं मेटल अँड वी हॅव टू ऍड इट Solder itself. ॲट द रिक्वायर्ड प्लेस. Without Bro? fluxing the solder surfaces, we have a very hard time getting the solder to wet. Now we're ready to apply solder. मग आता या ठिकाणी मेटल मेल्ट झालं माझं, Heat up the component, तिथे ऍड करायचं आणि ते मला सोल्डरिंग करायचं होतं. knock the tip of the बरोबर. पीसीबी डिझाईन अशा प्रकारे apply होतं. the iron to one side. तेव्हा ती जॉईन करायची, तिथे मला तिथे मेटल ऍड केलं मी तिथे फक्त लिक्विड मेल्ट झालं का ते The amount of time सॉलिडिफाय होतं. depends on its size, the temperature, and the power of the iron. Any connection take a few seconds, or छोटे छोटे कनेक्शन अशा प्रकारे सोल्डरिंग केलं जाता येईल. सोल्डरिंग remember to make as much contact as possible with the iron's tip in the part. Hold the flat edge of the iron's tip to the joint, not just the point of the iron. अशा प्रकारे कनेक्शन सुद्धा. बरोबर. आता वेल्डिंग करायची वायर, Small amount of solder on the वायरला सोल्डरिंग करायचं मला. bridge the air gap between the iron. बरोबर. जॉईंटला दोन वायर जॉईंट मला एका सोल्डरिंग करायचे. When you're done, remove first the solder and then the iron. दॅट इज सोल्डरिंग Only ऑपरेशन. 50 seconds to cool. Good contact between two joints. Last, check It ensures the good contact between two joints. Is the solder wet to both surfaces? Is the joint smooth and shiny? Is there too much or too little solder? On a printed circuit board, the connections make a volcano shape, adhering smoothly to both the entire pad and the component lead. Finally, trim the leaves with your components. So now that I've shown you some good examples, एक्स्ट्रा मेटल काय इथून कट केलं का, दॅट कॅन बी सोल्डर. the first big no-no is putting a blob of आधी solder सोल्डरिंग करून घ्यायचं, and trying to त्यानंतर एक्स्ट्रा मेटल जास्त द्यायचं रॉड मधलं, This ते won't कट work करू शकतो because आपण. the flux burns away and you're not ensuring that your work is hot enough for the solder to properly adhere. Secondly, don't grab your joint while it's hot. I didn't burn my fingers here, but it's worth it. थोडं ऍड केलं मेटल तिथं ब्रेजिंग करताना, सॉरी सोल्डरिंग करताना. कॅपॅसिटर वाटतं तो, कॅपॅसिटर कलर कोड दिलेले different. रेजिस्टर असेल, रेजिस्टर नॉट कॅपॅसिटर. So that's about it for this video. Leave any questions and comments in the box below. Remember to like and subscribe. So that is soldering operation. So in this way students, soldering and brazing operation is important part of your syllabus. बरोबर. सोल्डरिंग आणि ब्रेजिंग ऑपरेशन आपण उद्याच्या लेक्चरला डिटेल मध्ये शिकूया, सो दॅट वी कॅन अंडरस्टँड डिफरंट टाइप्स ऑफ ब्रेजिंग. आपण बघितलं ब्रेजिंग, ब्रेज वेल्डिंग, टॉर्च ब्रेजिंग, बरोबर, इंडक्शन ब्रेजिंग. सो दॅट रिमेनिंग पार्ट विल कव्हर इट इन द टुमॉरोज पार्ट. बरोबर स्टुडंट, ऑलरेडी 2-3च मुलं आहे, सो विल नॉट कव्हर मोर सिलेबस. ओके. सो इफ कॅन आस्क मी, तुमची चौथी असाइनमेंट लेक्चर झालं की तुम्हाला ग्रुपवर टाकतो मी लगेच. बरोबर. ट्राय टू सॉल्व दॅट फोर्थ असाइनमेंट ऑल्सो. आणि मग उद्या परवा चॅप्टर संपला का 5वी असाइनमेंट शेवटी देईल तुम्हाला मी. ओके स्टुडंट्स, सो prepare your assignments